agenda is on the screens. We are going to, first of all, spend time on reviewing what we did earlier. Simon will facilitate. Okay, Simon, still working. Thank you. Right, so we're going to I'll take through the agenda in a moment. I want to say, come here. Okay. They come here. So, what should we do? Can you hear now? Okay. All right. Sorry about that. Can we get started now? First of all, thank you for coming back so quickly after lunch. Secondly, I just want to select two things from the meeting we had in here with the Chief Minister. The first thing, and Saad, can you put up the commitment? Thank you. I want you to look at the commitment that the Chief Minister signed. This is the same commitment that many EDOs signed in April at the time of the roadmap launch, and that every EDO will sign. It is very unusual all over the world for a Chief Minister to make this personal commitment to your work, to our work. So I think this is very significant, a major commitment, personal commitment from the Chief Minister. Secondly, I hope you noticed, Saad, you might want to translate this. Secondly, I hope you noticed that in his speech, the Chief Minister responded to some of the things you said yesterday. He said that if you demonstrate performance, there will be vehicles. He said he will continue the process of reducing political interference in teacher appointments. He said he would continue to ensure that you can be focused on education. He was very supportive of the presentation that was made about the new role of EDOs. So one of the things I hope you noticed is that as a result of your work yesterday, the Chief Minister is already responding to those issues. Not all of them, not perfectly, but over time we will solve these problems. So can you translate? तो माइकल कहते हैं कि अभी जो आपने मीटिंग में जिसमें आपने देखा उसमें दो बहुत अहम चीज़ें हैं जिसको हम फिर से दोहराना चाहते हैं। पहली चीज़ ये डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट जो चीफ मिनिस्टर ने आप सबके सामने साइन की है, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि एक इतना बड़ा लीडर आप सबके सामने इस तरह की कमिटमेंट पे साइन करे और खुद कहे कि मैं अपनी पूरी कमिटमेंट देता हूँ आपकी मिशन को कामयाब करने के लिए। और ये वही कमिटमेंट है जो आपने बहुत से ईडीओ भाई बहनों ने लास्ट टाइम भी साइन किया था जब हम आपसे मिले थे, और इंशाल्लाह इस कमिटमेंट में हम सब पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ जिसका आपको फिर से जिक्र करना चाहता हूँ ये है कि कल प्रोग्राम के आखिर में हमने आपसे पूछा था कि आप बताएं कि चीफ मिनिस्टर को क्या क्या आपकी रिक्वेस्ट दी जाए और क्या क्या आपकी मुश्किलात को हल किया जाए। और आपने आज ये नोटिस किया होगा कि उन्होंने अपनी स्पीच में उनमें से कुछ मुश्किलात को फिर से जिक्र किया और उसकी तरफ कदम लिए हैं उनको हल करने के लिए। मैं ये नहीं कहता सारी मुश्किलात हल हो गई हैं और सब आपकी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा, आपने ट्रांसपोर्टेशन का आता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप रिक्वेस्ट देंगे। आपने टीचर्स की बात की थी, उन्होंने कहा कि टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है मेरिट पे। तो सारी प्रॉब्लम्स एक दिन में हल नहीं होती, लेकिन हम चाह रहे हैं, आपने देखा हो कि जैसे आप आइडेंटिफाई कर रही हैं मुश्किलात, वही मुश्किलात का हल जल्द अज जल्द हम आपकी मदद भी करेंगे। So in the first part of the afternoon now, we're going to prioritize some key interventions, and Simon will introduce that. And then we're going to talk about planning and trajectories later on in the afternoon. But before that, I want to ask the two Simons, one with the help of Saad, the other with the help of Ali, to play back to me and also to all of you the work you did this morning, so we start from understanding the challenges to improving student enrollment that you identified this morning.
Thank you, Mike. Output from one of the groups that I was working with. I hope you can see, even from back there, that the amount of thinking and effort and kind of energy that is apparent on that board, just through the kind of massive comments, dots. We had a really good session and some really good ideas. Let me just briefly explain to you the 9 key challenges that we identified to achieving your targets on student enrolment. And they were shortages of teachers. There's a key policy about a compulsory primary education which has not been implemented effectively. That was another key barrier. Migration of students within year and during summer months. Transportation of students and teachers to get to schools. Non-active school councils. And poverty. And then we prioritised these and selected from 9 of them the 3 most significant. And those 3 were, thirdly, the lack of commitment from some teachers to enrolling students in their school. Secondly, missing facilities. And the top challenge that we identified was a lack of understanding and appreciation by parents and the community of the need for education and to enrol their children in schools. So we selected 9 challenges, we prioritised 3 of those, and then we also began some work thinking about solutions and actions which we would take to address those. And that's the work we're going to go on to a second. But just let's hear from Simon to see whether the other... Sorry, we're going to get translation first. Apologies. बेसिकली जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी जिसमें आपने की चैलेंजेस बताए थे उसको हम समराइज कर रहे हैं. बेसिकली 9 चैलेंजेस थे. सबसे बड़ा चैलेंज था टीचर्स की कमी. दूसरा चैलेंज ये था कि यूनिवर्सल एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही. तीसरा चैलेंज जो आपने आइडेंटिफाई किया था माइग्रेशन थी. ये खाना बदोश होते हैं, वो पॉपुलेशन सेंसस के टाइम पे तो होते हैं लेकिन गवर्नमेंट के टाइम पे वो वहाँ पे नहीं होते. फिर ट्रांसपोर्ट का मसला हमने हाईलाइट किया. मिसिंग फैसिलिटीज़ की बात की. स्कूल काउंसिल्स एक्टिव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. फिर कमिटमेंट नहीं है टीचर्स की तरफ से और इसी तरह पॉवर्टी नहीं है. इन 9 मसाइल में से फिर हमने प्रायोरिटाइज किए थे कि इनमें से सबसे बड़े 3 मसाइल कौन से हैं. और तीसरे नंबर पे लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ टीचर्स था. उसके बाद दूसरे नंबर पे अवेयरनेस था. दूसरे नंबर पे मिसिंग फैसिलिटीज था और पहले नंबर पे लैक ऑफ अवेयरनेस था. तो बेसिकली हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं और आपने देखा होगा बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस आए, बहुत सारे सजेशंस आए जिससे नजर आता है कि आप बहुत एनर्जाइज हैं इस टॉपिक के ऊपर. We had a very similar list, but in a slightly different order, so I'll do my top 10 from the top. Number 1 was poverty. Number 2 was a general lack of awareness. Number 3 was the shortage of staff. Where am I going next? Facilities, cultural barriers, the influence of parents, distance to travel to school, and then we had a couple of smaller issues, migration like the one that came out over there, and the illness of students as well was another one. So a very similar set of issues. We also already have solutions for 8 of the 10. So we made really good progress in coming up with actions which will really help us in the next activity. तो इस ग्रुप में भी उसी पिछले ग्रुप की तरह वही बहुत सिमिलर से मसले आपने ढूंढे और साथ में उनकी कुछ सॉल्यूशंस भी आइडेंटिफाई की. तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा इशू जो आपने कहा जो सबसे ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करता है वो है गुर्बत. उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिशियंस और दूसरे लोग. उसके बाद शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. स्कूल बहुत दूर होते हैं. टीचर की एटीट्यूड और मोटिवेशन में कमी है. फैसिलिटीज़ नहीं है. अक्सर पेरेंट्स को पता नहीं होता. पेरेंट्स को पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको एजुकेशन की अहमियत का नहीं पता होता. बहुत से कल्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते कुछ एरियाज़ में. माइग्रेशन है, जो लोग किसी एक जगह नहीं रहते, मूव हो रहे होते हैं, उनको इनरोल करना मुश्किल होता है. और बीमारी की वजह से भी इनरोलमेंट में प्रॉब्लम होती है.
और इनमें से बहुत से इश्यूज जो हैं वो हम देखेंगे आज के किस तरह एड्रेस किए जा सकते हैं। कुछ इश्यूज इनमें से चीफ मिनिस्टर से हमने रेस किए थे कल, और आज स्पीच में उन्होंने इनको भी मेंशन किया है, तो अभी हम बाकियों के भी हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। Thank you, Sergeant. Can I draw your attention to slide 47 in your handbook? Slide 47. Slide 47 asks you, out of these things you've heard from the two Simons, the work you did this morning, what personal commitments are you going to make to changing in your district? So just spend 2 or 3 minutes setting out on page 47. अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए और कुछ उनकी सॉल्यूशंस भी ढूंढी, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी वर्कबुक्स में लिखें पेज नंबर 47 पे कि आप अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में वापस जाके कौन सी 2 चीज़ें दूसरे तरीके से करेंगे इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, अपनी अपनी वर्कबुक्स में लिख लीजिए। अच्छा, और कुछ लोग मैंने देखा है आज नए आए हैं, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो हाथ ऊपर करने में आपको वर्कबुक दे दूंगा। ठीक, शुक्रिया। Thank you very much, colleagues. I hope we've been able to report some actions. What we want to do now is... This is another extremely important activity for us because it helps you to think about the order in which you might want to take action and how you would begin to think about the sequence of the things that you're going to do. We spent some time this morning thinking about the challenges to your targets on student enrolment, and a number of you began to think about solutions and actions that you might take in response. What we'd like you to do now, until about 3 o'clock on your tables, is to think about those solutions and actions you might take in response to the challenges on student enrolment, and think